So we are continuing case log on PGBP. So first case is section 37 allowed extensively. So in this case, another case law is CIP versus GIC 2006. So here we have to discuss about expensive on issue of bonus shares. So last time we have seen that when company issued shares, so those expenses are called preliminary expenses which are capitalized. But what about bonus shares? So in case of bonus shares, bonus issue does not increase capital employed. Because what happens in bonus issue, reserves and surplus is converted into share capital. It means reserves and surplus is capitalized. But no additional funds are received by company, so we say that there is no increase, there is no increase capital employed. So it means this is not capital expenditure, so therefore these are not preliminary expenses under section 35D, and these are allowed as revenue expense in the current year when they are incurred. So another case law is Hero Honda Motors Limited versus CIT 2005. So in this case, company has incurred traveling expenses on spouse of MD. It means MD had to travel for business purpose, and so his or her spouse also go along with MD. So question is that these expenses which are incurred on traveling of spouse will also be allowed as business expense. So it will be decided that so these expenses are incurred for commercial expediency and business consideration. It means so spouse will provide moral support to MD. So these expenses are necessary in business interest. So therefore, and even foreign travel is also included. So these are also allowed as revenue expense of business. It means these are also allowed as expense. So another case is section 37 disallowed expenses. So if there is, we also know that if there is any fine or penalty, so that is disallowed. So here we will see some illegal payments which are disallowed under section 37. Number one is Confederation of Indian Pharmaceutical Industry versus Central Board of Direct Taxes 2013 case law. So in this case, a company provides you free bees. So freebies are called free samples or discounts or some incentives to medical practitioners, means doctors, and to persuade doctors so as to prescribe certain medicine. So these are not allowed at the expense of business. Because doctors are not allowed so such type of discounts by any pharmaceutical company. It means this has been described as illegal practice which is prohibited by law. So since it is illegal practice, it means if any discount or sample or any facility is given to doctor by medical companies, so that will be illegal payment and that will be disallowed as expense. So another similar type of case law was observed in CIT versus CAT Scan and Diagnostic Center 2012. So sometimes what companies do, companies ask directors to prescribe or to refer some patients for medical tests, etc. And doctors are paid some commission. So this is also illegal practice. So in this case, what happens? So company will pay commission is paid to doctors for referring patients for diagnosis or tests. So it means, and this is also illegal practice which is prohibited by law. So it means this is also disallowed expense. It will not be allowed at expense of business. So another case law is CIT versus Neelavati 2010. In this case, this even is a cinema theater. What happens? So there is a rush of people. So payment is made to police and gundas to keep persons away for security purpose. To keep away persons for security purpose. It means a theater has employed some police personnel or gundas and they are paid some commission so that this public is avoided. So this is called as a bribe. So it means this is also illegal. So it is also disallowed as expense of business. It will not be allowed. Another is Millennia Developers versus CIT 2010. So here builder had constructed flats, but there is some violation of building bylaws.
then government has introduced a notification that they can correct this violation by paying some regularization fees. So कोई violation has already been done in the building, so you have to pay some regularization fee. So that it is allowed at expense, so it is treated as a penalty for violation of law. So this is not a normal fees, it is called as a penalty. It means government has imposed the penalty because of violation in building bylaws. And violation of law, it is our penalty. So fines and penalties we know which are disallowed, so it is also disallowed, not allowed at the expense of business. So section 40. So first one is section 40, clause A, clause I. So here we know that whenever we make any payment to non-resident without TDS, it is disallowed. But in this case, payment is made to non-resident agent without TDS. So this is the case law of CIT versus Maruti Suzuki 2018. But this payment which is made to non-resident, this is not taxable in India. But we know that under this section, TDS is applicable if this income is taxable in India. But here it is not taxable in India, so hence no TDS is allowed. So therefore, this payment made without TDS is allowed as expense. It means जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट को, यदि वो टैक्सेबल है इंडिया में, तभी आपको TDS चार्ज करना है, अदरवाइज TDS की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट में हो गया तो 40AIA. इसमें कि आप किसी रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं उसके ऊपर भी आपको TDS चार्ज करना है, अदरवाइज उसमें आपका कुछ एक्सपेंस जो है डिसअलाउ हो जाता है. इन दिस केस अब क्वेश्चन राइट होता है कि TDS किस पॉइंट पर आपने चार्ज करना है, जब आप उसको पेमेंट कर रहे हैं या जब वो मनी ड्यू हो गई है. इस केस में हाँ, अमाउंट पेड इन एडवांस बट दिस इज नॉट ड्यू. तो दैट इज TDS इज एप्लीकेबल. तो पालम गैस सर्विस वर्सेस CIT 2017 में तो इस केस में डिसाइड हुआ था TDS is applicable when payment is made in advance. मीन्स यदि आपकी पेमेंट ड्यू नहीं भी है और आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपको TDS चार्ज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो कुछ एक्सपेंस है जैसे 30% हो गया वो डिसअलाउड हो जाएगा. 40B में होता है जो हम रेम्यूनरेशन पे करते हैं पार्टनर्स को, वो अलाउड होता है, उसकी लिमिट्स होती हैं. तो इसमें केस था कि आपने रेम्यूनरेशन पे किया है वर्किंग पार्टनर को, पर वो अनरीजनेबल है अंडर सेक्शन 48(2) में. 48(2) में होता है यदि आप किसी रिलेटेड पर्सन को कोई पेमेंट करते हैं और वो अनरीजनेबल है तो डिसअलाउ हो जाती है. अब जो पार्टनर है वो भी फर्म के लिए अनरिलेटेड पर्सन माना जाएगा, तो यदि आप उसको ज़्यादा रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं तो डिसअलाउ होना चाहिए. बट इस केस में डिसाइड हुआ था CIT वर्सेस ग्रेट सिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2013 में, यदि आप जो पेमेंट कर रहे हैं रेम्यूनरेशन की वर्किंग पार्टनर को एंड दिस इज विद इन लिमिट्स अंडर सेक्शन 40B में जैसे लिमिट है 90% या 60% की, लेकिन उस लिमिट में है तो ये अलाउड है इवन दो इट इज अनरीजनेबल अंडर सेक्शन 48(2). इट मीन्स कि जब सेक्शन 40B अप्लाई हो जाएगा तो 48(2) अप्लाई नहीं होगा, तो जिसे अलाउड है. देखते हैं तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये सेक्शन 40B है, 40B ये ओवरराइड कर रहा है ओवर राइट्स 48(2). उसमें जब 40B अप्लाई हो रहा है तो 48(2) आपका इनएप्लीकेबल हो जाएगा. तो इसमें यदि वो अनरीजनेबल पेमेंट भी है बट लिमिट्स में है 40B की तो वो अलाउड है. फिर आता है सेक्शन 41 में. इसमें होता है कोई वेवर ऑफ लोन है, आपने कोई लोन लिया है और वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो आपको माफ़ कर देती है, आपको पे नहीं करना है, तो क्या वो आपकी इनकम मानी जाएगी, उसका क्या ट्रीटमेंट है. तो नंबर 1 है CIT वर्सेस महिंद्रा एंड महिंद्रा 2018 में. इसमें आपने लोन लिया है, लोन इज टेकन टू बाय प्लांट एंड मशीनरी, दिस हैज बीन वेव्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अब आप इसको इनकम नहीं मान सकते, इट इज नॉट इनकम बट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. इट मीन जब आप लोन लेते हैं कैपिटल एसेट के लिए और वो आपको पे नहीं करना है, तो पहले भी आपने जब लोन लिया था वो इनकम में नहीं छोड़ दिया था, रिसीट नहीं थी, तो वो इनकम नहीं मानी जाएगी जब उसका वेवर होगा. बट या वो एक्सपेंस भी नहीं था जब आपने लोन अरेंज किया था, तो इसको आप डिडक्ट कर लीजिए फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. जितना लोन आपका वेव हो रहा है और जो बैलेंस अमाउंट रह जाएगा उसके ऊपर कैलकुलेशन चार्ज हो जाएगी.
तो ऐसे सिमिलर केस लाइक हुआ था। तो इस रेवेन्यू रीजेंट लिमिटेड वर्सेस CIT 2011, इसमें भी आपने लोन लिया था तो बाय कैपिटल ऐसे बाद में ये वेव हो जाता है, तो क्या ये आपकी ट्रेड लायबिलिटी की रिमिशन कैंसिलेशन मानी जाएगी और वो इनकम बन जाएगी? नो, इट इज नॉट इनकम, इट इज आल्सो टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, तो इसको भी आप एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दीजिए। सो अनेदर केस वाली CIT वर्सेस सॉफ्टवर्क्स कंप्यूटर्स 2013। In this case, loan is taken for a relocation of office premises. हम अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं किसी नई प्लेस में जिसको हम न्यू ऑफिस कहते हैं, उससे आपके कस्टमर्स इंक्रीज होंगे, बेटर एडवांटेज मिलेगा आपको लोकेशन का, तो इट मीन्स दिस इज आल्सो ऑफ कैपिटल इन नेचर। तो ये जो लोन एरिया आपका वेव होता है, अब इसमें भी लोन जो था आपका वो वेव हो गया है, तो इट मीन्स लोन इज वेव्ड। लोन आपको वापस नहीं करना है, तो ये भी कैपिटल नेचर का है, एंड दिस इज आल्सो डिसअलाउड एज एक्सपेंस फॉर इनकम, ना ही ये आपकी इनकम मानी जाएगी। अनदर केस इज जो रोला टेनर्स लिमिटेड वर्सेस CIT 2011। अब केस आता है, इसमें आप लेते हैं वेवर ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन। अब आपने लोन लिया है वर्किंग कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल लोन होता है टू कैरी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। अब ये वेव हो गया है, तो इट मीन्स इट इज कॉल्ड रिमिशन ऑफ ट्रेड लायबिलिटी। एक तरीके से जो लोन आपने वापस करना था वो बिजनेस लायबिलिटी भी आपकी, अब वो आपकी कैंसिल हो गई है, रिमिशन होता है कैंसिल हो गई है। तो सेक्शन 41 में जब आपकी ट्रेड लायबिलिटी रिमिट होती है, कैंसिल होती है, तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी फ्रॉम बिजनेस से। तो इट मीन्स जब आप किसी एसेट को बाय करने के लिए कैपिटल नेचर की है जो उसका लोन लेते हैं, वो कोई एसेट की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। पर एक बिजनेस एक्टिविटी का लोन है वर्किंग कैपिटल है जैसे, तो वो जब वेव होगा वो आपकी इनकम मानी जाएगी। तो PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, यू कैन रीड।